Once again, good afternoon to all of you. Those who are attending by sitting right in front of me, as well as all of you who are attending this, that is the others, through the online mode. Before I begin my presentation today, let me share a few instructions for all of you, and especially those who are attending this through online mode, especially the YouTube. Now in the chat box, so this is a sort of instruction and request for all of you who are watching this webinar, attending this lecture through YouTube or the platform YouTube. You are supposed to look into the chat box, and there is a link of Zoom or link for Zoom, and you are requested to join the Telegram channel of Unique Academy through the Zoom link. The link is already shared. You can check out the chat box. So that you can ask questions and get it clarified. Number one. Number two, and this instruction is for all of you, including you and the other set of students. The demo lectures would be from Monday, that is today, to Thursday. So Monday se Thursday later, demo lectures hoenge. For coming 3 weeks, we'll have just one session each day from Monday to Thursday. But then subsequently after 3 weeks, we are going to have 2 sets of sessions or lectures, let us say. Then all of you must be aware of that, but let me share that as well. The teaching for optional is about to begin in the first week of August, that is from 8th of August to be specific. So in other words, from 13th of June till 7th of August, we'll be exclusively dealing with the GS, General Studies, as well as the SA. And last but not the least, this is the instruction in regard with joining the Google Classroom. If in case you find any technical difficulty while joining Google Classroom or having access to the same, you can contact our e-learning department. I will share the number. It is 89. You can write it down. It is 89. I am just sharing the number of our e-learning department in order to have access to Google Classroom. Now, those who have completed their formality of getting admitted to this course are only allowed to have access to Google Classroom. And the number is 8956 340 8956 340 402. Okay, so once again, let me repeat just one instruction. That is the first instruction for those who are attending this lecture through YouTube. This is a humble request to get to see the link and join the Telegram channel, so that you can be part of the Zoom link and get to ask questions and get it clarified. Okay, so that's it. This is done. Let me welcome all of you in this a kind of paradoxical journey. On one hand, demanding and at times exasperating, tiring. But let me assure, on the other hand, it will also be enlightening, enriching, and encouraging and empowering. The 3 different stages of civil services examination, number of papers, in turn, so many subjects, vast syllabus, and importantly, if you focus on mains examination or even the prelims, also we can include the personality test. The kind of questions which are asked by UPSC at all 3 levels. If we take all of this together, certainly this format makes civil services examination one of the toughest examinations in the world. How look into the papers, the syllabus, and the kind of questions which are asked by UPSC right from day one appropriately, and then in turn, if we
come up with a right plan and execute that thoroughly in a literal sense, then you can even think of daring to take on to this examination and then get through the examination right in your first attempt. Now, as I stated earlier, yes, it is challenging examination which requires a planned preparation, planned study. And that is what today in this very first introductory lecture we are going to discuss. Okay, so as you notice the plan of action, and I guess there are 3-4 handouts which are already given to you. So one is, which is a basic one, which consists of the primary information about the services, qualifications, and then the scheme of examination. Okay, I'm sure all of you are well aware of that. Then whatever I'm going to talk about, it is part of this note. Okay, and then there is also a primary field on essay writing, comprehending important terms in the questions. I'll get back to these handouts subsequently. Don't worry about that. So, okay. So let us try to make sense of what kind of planned study are we going to require to deal with such a challenging examination. For sake of convenience, I have split my presentation into certain parts or sections. I guess they are 7 in number. So the very first happens to be the introduction. I dealt with the nature of journey. Okay, I need not repeat the same thing. The second point, after getting to know the introductory aspect of the civil services exam, I skipped that. Okay, I was very brief about that. The first important requirement of the planned preparation is the very obvious thing, comprehending the examination. How are we supposed to do that? This would be a kind of repetition for most of you, because I'm sure you must have already attended the webinars yourself, seen the nature, scheme, so on and so forth. So let me be very quick and brief as far as explanation of these initial aspects are concerned. Prelims, being an objective test or examination, prelims require clarity, sharpness, and precision in one's own understanding. So it is an objective test based on multiple choice questions. It has negative marking system and basically a qualifying test. Now, you are always supposed to keep in mind the objective nature of the prelims, which in turn requires, that is demands, what kind of preparation? Sharp and precise. So always keep in mind these two words, sharp and precise. To what extent can I ensure sharpness and precision in my preparation? Okay, very plain and simple. It needs a wider reading, good grasp over technical and informative aspects of the subjects and its current dimension. I keep on telling students about these 3 fundamental aspects of preparation for prelims as well as mains. So one aspect is the conceptual aspect. We'll get back to that later on. Second is the informative dimension of each and every subject. You are going to get to see tons of information, let us say. We have to read it carefully. We have to process it carefully. And if we could process it appropriately, rightly, right from the beginning, that would definitely subsequently help you in better consolidating that and revising that whenever we approach, or let us say, whenever the exam is around the corner. And last, that is the current dimension. Both in prelims as well as mains, the current and contemporary dimension happens to be very, very important. Thus, extensive as well as intensive. There are certain words which are placed in quote in quote, single quote in quote, because they are supposed to be very important and you are supposed to be attentive right from the beginning. So extensive reading. So whatever we are asked to go through, read, maybe NCERT, reference book, or some material including the newspaper for current events, extensive as well as intensive. Ab intensive ka matlab kya hai? We have to go deeper. We'll have to possibly imagine that each and every word in a sentence may contain a potential question. So हर एक sentence तो जाने दीजिए, लेकिन words में possibly bit मिल सकता है, कोई ना कोई question मिल सकता है, ये हमारा सोच होना चाहिए. Okay. So extensive as well as intensive study emerges as a prerequisite of this stage. Finally, which is also important,
revision and practice of maximum number of multiple choice questions. So revision is a key as far as prelims is concerned. So is the case of mains. But given the objective format of prelims, as I stated earlier, precision, sharpness. There is no space for any kind of ambiguity. इन्हें मुझे थोड़ा confusion है, वो नहीं चलेगा prelims के लिए. Otherwise, you will have to ready to take some sort of risk there. तो सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, तो वो रिस्क लेना चाहिए. सो बेसिकली जो हमें कॉन्फिडेंट लगता है कि नहीं 30 वेट्स, 40 वेट्स, 45, 50, वो नंबर, वो स्लैब हमारा बढ़ना चाहिए. सो revision plays a very critical role. So if I keep on revisiting whatever I study right from day one, keeping in mind one's own plan, then definitely that would help you in ensuring precision and sharpness. Now, practice of maximum number of MCQs, multiple choice questions, so that we can test one's own or assess one's own preparation. Number two, by doing the same thing, we can identify one's own lacunas. Number three, thereby, we can identify the focus areas or those areas which are to be subsequently focused by us. So let us make it simple, saying a sort of reform program can be developed by oneself by each and every candidate. So practicing maximum number of multiple choice questions. So I guess 1, 2, 3, 4. These are the 4 key points as far as the prelims is concerned. MCQs seem essential in order to score well and qualify in the prelims. So this is it as far as prelims is concerned. And I guess right in the first lecture, this would be more than sufficient. Now moving on to mains. This is the important stage of civil services examination. बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, हम सबको पता है, because of the weightage. The main feature of the phase is the written nature. I'm not going to tell you how many subjects are there and so forth. All of you are aware of that. So I'm going to be very, very precise about that. The main feature of this phase is the written nature of the examination. A candidate is needed to write in a prescribed word limit. Okay, so word का भी limit है, time का भी limit है, for a specific number of marks. So 3 aspects. So marks, that is the weightage. Second, the time. So you are going to get 180 minutes for each paper. यानी कि 3 hours आपको समय मिलने वाला है. Okay, and then the word limit. 100 words, 150 words, 250 words, 1000 to 1200 words as far as one essay is concerned. Okay. So these are the, so let us look at the first point as a code of conduct. Okay, so आपको एक code of conduct है. क्या code of conduct है? उसका अहम हिस्सा होगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें आंसर करना क्या है, लिखना क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है. तो कोड ऑफ कंडक्ट का पहला हिस्सा, which is very, very important, would be very, very important, that is the question. So what is the question? Read it carefully and identify the demand of the question exactly as precisely as possible. So वो पहला उसका एलिमेंट होगा. दूसरा है ये जो मैंने 3 चीजें यहाँ पे लिखी है, वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, and then the marks, that is limit in terms of marks. Okay, so this is a code of conduct, and let us always keep in mind this code of conduct with 4 aspects right from day one. Hence, mains necessitates, that is requires, besides the understanding of the subject. So understanding तो essential है, prelims में है, mains में है, interview में है, लेकिन besides that, the ability to present one's understanding in accordance with the demand of the question. So understanding is one thing, and to be able to put across things, present one's own point of view, which should constitute the answer of the given question very effectively. वो तो हमें बहुत ही effectively वो ability हमारे पास होना चाहिए. One has to see that every answer looks like a well thought out and sharply, precisely organized piece of argument. And you should aim at evolving each answer, not the entire paper, but every answer must seem like a well thought out and organized kind of argument coming from the candidate. Okay, so let us look at each answer as end in itself. कि चलो भाई 4-5 क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखा, 4-5 का अच्छा लिखा, तो at the end of the day, what sort of impression the examiner would have of you or of yours, it won't be as per the expectation. क्योंकि हमने आधा ऐसा किया है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. Maximum amount of or number of questions need to be
in the category of the best, let us say. Okay, but the process of understanding in respect with means, अब ये decode मुझे करना है कि understanding एक हिस्सा है और दूसरा writing या presentation दूसरा हिस्सा है. But the process of understanding in respect with means needs to go beyond the obvious. हमने कुछ पढ़ा है, उसका मतलब हमें समझ में आया है. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नहीं, मतलब हाँ समझ में आया, लेकिन वो ऊपरी ऊपरी भी मतलब हो सकता है, यानी कि लिटरल मीनिंग हमें समझ में आया, लेकिन वी हैव टू इन मोस्ट ऑफ द केसेस गो डीपर, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट एंड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स. उसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए. तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब खाली जैसे लिटरेट कोई लिटरेट पर्सन करता है वैसा वाला नहीं है. लिटरल मीनिंग को हमें लिमिट नहीं करना है, उसके आगे हमें जाना है. ओके, सो beyond the obvious, literal and textual meaning of a component and information, what facts, figures and data related to it. It demands to look into analytical dimension of a given topic. अब आपको ऐसे कीवर्ड्स, इसीलिए हमने ये डे 1 ही ये सर्कुलेट किया है. This note consists of, if you look at the second point here, comprehending important terms in question. So discuss है क्वेश्चन में, explain है, analyze है, criticize है, okay, evaluate है. So you would come across almost 30 to 35 words, okay, in question papers, including GS, then your optional, even the topic of essay, that is the essay paper. So these keywords play a very important, significant role in understanding the demand of the question. So if we are not aware of the keywords, कि भाई analysis से for example और analyze का मतलब क्या है, तो analysis का मतलब है unfolding something. Okay, so we have one component and we have to analyze something as part of the component. तो हम उस component को क्या करेंगे, break down करेंगे into sub parts, और once we break down in the form of sub parts or sub components और उसके parts में, तो फिर हम क्या करेंगे उसका, so what kind of relationship one part is having with another part. So this is how we'll have to look into the interrelationship between the parts. Okay, और वो interrelationship किस form में हो सकता है? Few parts may be in the category of or part of the reason. Okay, and then the other components, other sub components, sub parts, sub elements can be in the category or part of the consequence. Effect बोलते हैं ना हम, cause effect relationship. So analysis, simply speaking, to put it in a simple way manner, is a process which includes cause effect, establishment of cause effect relationship. Cause effect relationship. So क्या reason है, क्या cause है, और उसका नतीजा क्या है, उसका consequence क्या है, उसका effect क्या है. That is what we do generally as far as the process of analysis is concerned. Okay, say for example, analyze the problem of global warming in world today. ये बहुत ही general question है, ऐसा इतना बड़ा भी general भी question आ सकता है. Analyze the problem of poverty in India. Analyze the problem of digital divide, the rising digital divide in India. अब उसमें करना क्या है हमें? तो what is the state of that given problem, and then we will have to present that problem in terms of various components. Okay, and then ultimately look, these are the reasons. Say for example, the digital divide is increasing day by day, then what are the possible reasons? Okay, what are the reasons, what are the causes? So we will have to put up those causes, and then the effect, what sort of effect that is going to have, what sort of consequence that is going to have on Indian society. Okay, so analysis. दूसरी एक की टर्म है, कीवर्ड है दूसरा एक, वो एक्सप्लेनेशन. सबको पता है एक्सप्लेन में क्या करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए. ऐसे इमीडिएटली कोई पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम, एक्सप्लेन करते का मतलब क्या करते हैं. मेक इट वेरी सिंपल, वी टेंड टू आंसर द व्हाई ऑफ समथिंग, ये ऐसा क्यों है. ओके, सो टू लुक इनटू द रीजंस बिहाइंड दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, rather the core of the term explain. Okay, so yes, it demands to look into analytical dimension of a given topic.
अब मेंस में कॉन्सेप्ट तो हमें पढ़ना ही है, इंफॉर्मेशन को हमें कंसोलिडेट करना है, करंट का भी हमें देखना ही देखना है, लेकिन ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से ये हमें पता चल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब है गोइंग बियॉन्ड द लिटरल टेक्सचुअल, टू बी एबल टू रीड द बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, उसका लॉजिक क्या है, ओके, मे बी प्रीमाइसेस, सो दैट इज वन थिंग, दैट इज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस मेक दैट सिंपल। दूसरा है, जैसे हमने कहा कि टू बी एबल टू प्रेजेंट इट इफेक्टिव, ये हमें लिखना भी आना चाहिए, इफेक्टिवली लिखना भी आना चाहिए, ओके। और उसी अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस को हम इंटर्न आर स्लोली एंड स्टेडीली ट्राइंग what in a systematic manner to understand and make sense of, and therefore analytical ability, okay, analytical ability, the ability to explain things, these are going to play significant role. There is another aspect, interlinking traditional and conventional part with the current and contemporary events. So what is going to happen in let me put it very broadly, maybe in coming 2 months, maybe in coming 3-4 months, okay, that a lot of our energy or substantial part of our energy would be consumed in consolidating the static part of each and every subject. We are going to start the current preparation through reading newspaper for just 2 hours a day. That is going to be part of our code of conduct, that is the planning. So 2 घंटे से ज्यादा आप मत दीजिए, that is advisable, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आपने देने का सोचा है तो स्टैटिक पार्ट का प्रिपरेशन नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि आपका स्टैटिक का अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको कोई भी वर्ड इस्तेमाल कीजिए, स्टैटिक, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, कोई भी उसको, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो 50 से लेकर आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो स्टैटिक है, ओके, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जैसे शुरू हुआ 26 जनवरी 50 से, तो तब से लेकर आज तक कोई प्रोविजन में, कोई पार्ट में, कोई सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कोई अगर इशू आया है, ओके, तो वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और शायद ये भी हो सकता है कि कोई इशू 70s में आया था, कोई 80s में आया था, कोई 210 में आया था, कोई 220 में आया था, शायद 2022 में भी आया होगा, ओके। तो अब the Karnataka state has come up with anti-conversion law, and there is a lot of debate is going around that. So which other states have already enacted anti-conversion law? What is that whole issue all about? Are there any provisions as far as conversion or anti-conversion is concerned in Constitution of India? We have right to religion under Article 25 to 28. So is there any mention of conversion? Does the word conversion appear anywhere in the set of Article 25 to 28, or for that matter any place, anywhere, any part of Constitution of India? So the issue is, you would be using your energy, time, effort to consolidate the static part, okay, I'm putting it generally, and then you would be dealing with current event, you would be preparing current event just in the form of reading newspaper, attending to the classroom teaching, going through the notes circulated, okay, and 2 hours. उसका टाइम का लिमिट क्या है? हर दिन 2 तास, इससे ज्यादा मत दीजिए, कभी कभार 2.5 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, उतना ही है, उससे ज्यादा मत कीजिए। बट वी हैव टू कीप इन माइंड, अगर मेरा स्टैटिक हुआ है अच्छा, तो उसका करंट क्या है मुझे समझ में डेफिनेटली आएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो यस, द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश interlinks between the tradition going to play a very significant part. Now आप थोड़ा सोचिए कि आपको फंडामेंटल राइट्स पे इतना जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, इतना जनरल, कि आपको लगेगा कि अगर मैंने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी लिखी तो वो काफी होगा मेरे लिए। लेकिन दूसरे कैंडिडेट ने ऐसा किया है कि he she made it a point to include the static part of constitutional provision, and while doing that he she went down to illustrate that by citing out current examples. तो किसका आंसर अच्छा लगेगा? वो दूसरे वाला आंसर अच्छा लगेगा। तो इसीलिए let us keep in mind this aspect right from day one. Moreover, prospective thinking about the future
and prescriptive, to be able to suggest remedies and solutions. So these two abilities are going to, again, I'll be using the word, or I am going to use the word critical again and again. आपको लगेगा कि हर कोई चीज क्रिटिकल होने वाली है, तो वो होनी ही वाली है. You take it for granted. Okay. So prospective, आप देखिए कि डिजिटल डिवाइड से फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लीजिए. So if we have a problem around us, let us understand that. Look into the historical background briefly. What is the scenario, that is the present condition of the problem? What steps are taken by government, maybe even the society at non-governmental level? Okay, and how far have we gone in dealing with the given problem? अगर substantially उसको हमने डील किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन despite the problem around us for so many years, number one, and despite taking up so many initiatives both at the level of government and non-governmental level, if somehow we are not able to deal with the problem, तो हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि और क्या कर सकते हैं उसके लिए. So here comes something called as the prospective thinking. और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, so let us be very careful while reading editorial columns. Okay, then memo, कुछ भी हो सकता है, experts के articles हो सकते हैं. तो let us try to find out if something is helping us, if something is there in the piece which can help me in building this ability of thinking about future. फ्यूचर के बारे में तो हमें सबको सोचना है, लेकिन वो सोच हमारी यूटोपियन भी नहीं होनी चाहिए, आइडियलिस्ट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यू आर सपोज टू बी आइडियलिस्ट, ऑल ऑफ यू. ओके, let us not be realist right from day one. Let us be realist as far as the preparation is concerned, but as far as your vision is concerned, the way in which you look at your society, ecology, world, that has to be reflective of idealism. But आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि instead of being out and out utopian, अब यूटोपिया का मतलब क्या होता है? It is something which is very difficult to execute. वो यूटोपिया होता है. तो अगर ऐसे हम सोचने, जैसे बहुत ही सिंपलिस्टिकली अगर हमको उसको रखना है, तो कहेंगे कि अरे यार आप क्या ये ड्रीम देख रहे हो कि वो तो असल में नहीं आ सकता, उसका प्रैक्टिस ही इम्पॉसिबल है. तो लेकिन यस, we have to be utopian at one level, there is no doubt about that. विजन का मतलब क्या है? तो आगे की सोच होती है, और आगे का हम सोचते हैं तो बुरा थोड़ी सोचते हैं, हम अच्छा ही सोचते हैं ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट का ही हम सोचते हैं. ऐसा कभी सोचेंगे कि मेरा लास्ट नंबर भी आएगा तो चलेगा. वी टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1. ओके, सो वो इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है. लेकिन उसका दूसरा साइड भी देखिए, find that is essential, but while suggesting, now the second point, while suggesting suggestions, measures, यानी कि वो जो prescriptive वाला है, तो वो suggest करते वक्त वो suggestions out and out abstract, utopian, very difficult to implement ऐसे नहीं होनी चाहिए. तो मैं एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करूंगा, the suggestions you are supposed to give, okay, the remedies you are supposed to suggest, they are to be pragmatic in nature. Okay, यानी कि उसका मतलब है कि उसको हम implement कर सकते हैं in the category of implementable. नहीं तो जिसका implementation ही नहीं होगा तो impression क्या create होगा कि नहीं इसका तो बहुत ही out and out idealist and utopian सोच दिख रहा है, उसको reality का शायद पता ही नहीं है, ऐसा भी impression हो सकता है. इसीलिए let us be very well aware of, okay, let us be very well aware of the reality on ground. Let us be grounded at one level, and then by doing that also think of the future. So prospective thinking and the prescriptive thinking. So everything, NCERT में कुछ मिल सकता है, standard reference books में कुछ मिल सकता है, class note, classroom discussion, newspaper, so on and so forth. Okay, moreover, thinking help in comprehending a given issue with all its dimensions. तो देखिए, मुझे issue understand करना है, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे करना है, उसका एनालिसिस मुझे करना है. ओके, उसका करंट सिनारियो क्या है ये भी मुझे करना है, उसके लिए क्या क्या किया गया है ये भी मुझे करना है, वो सफिशिएंट है या नहीं है ये भी मुझे देखना है, और बाद में
उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उसका फेट क्या हो सकता है, अगर ऐसे ही चलने लगा तो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा. सो प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग. एंड देन importantly, as part of the prospective thinking, you must be in a position to suggest implementable, and using that word just for sake of convenience, pragmatic solutions. ये बहुत ही सिविल सर्वेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम नेचर होता है. दिस वुड हेल्प यू इन आंसरिंग इथिक्स क्वेश्चंस. बीइंग प्रैग्मेटिक. ओके, बीइंग प्रैग्मेटिक ये होना चाहिए. खाली प्रैग्मेटिक नहीं है, उसको यूटोपियन भी होना चाहिए. ओके, खाली प्रैग्मेटिक नहीं है, लेकिन there would be number of situations wherein you would be supposed to be what, pragmatic in nature. Okay, in a nutshell, on one hand, acquiring, developing and enhancing knowledge about every component and to express it sharply need to be in place. So knowledge भी हमें gain करना है और उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने का कैपेसिटी भी हमें डेवलप करना है. सो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट द मेंस एंड द काइंड ऑफ प्रिपरेशन you are going to need as far as the mains is concerned. Now moving on to the third point, reading syllabus. I'm sure all of you must have done that. A candidate is expected, so let me be very, very brief here. A candidate is expected to read the syllabus, different sections, components, chapters in it carefully at least for 3 to 4 times. ये मैंने ऐसे ही लिखा है. You can make it a point to read it for the 6th time as well. Okay, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए. What is the syllabus of history GS1? I'm talking about the mains examination. 4 sections उसमें है, तो वो कौन से है, उसमें इंटर्न डिटेल सिलेबस क्या है. GS2 इंडियन पॉलिटिकल सिलेबस क्या है, उसमें खाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, गवर्नेंस है. ओके, ये सब चीजें है उसमें, पॉलिसीज, स्कीम्स, सो एंड सो फोर्थ. ओके, दिस वुड हेल्प इन प्रिपेयरिंग अ प्लान, choosing a reference list, reading newspapers and journals. Most importantly, a good grasp of the syllabus would help in another important step to be undertaken, that is the question paper analysis. अब उसका और उसका क्या कनेक्शन है? सो सिलेबस तो हमें पता ही होना चाहिए. बेसिक चीज, किस चीज के लिए सिलेबस पता होना चाहिए, और व्हाट प्राइमरी रीजन डू वी नीड टू नो द सिलेबस. हमें पढ़ना क्या है, इतनी ऑब्वियस और प्राइमरी चीज है ना. और बाकी तो सब चीजें है कि what references are to be referred, are the references adequate, so on and so forth. न्यूज़पेपर में मुझे क्या पढ़ना है, अगर मुझे सिलेबस पता है तो उसका एक ऑब्वियस आंसर मुझे मिल सकता है. लेकिन वो जो लास्ट वाला मैंने कहा है, ओके, इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी टेकन, क्या है वो, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. अब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में क्या करते हैं हम कि ईयर वाइज, वो आगे तो है ही उसका, वही पे मैं बता दूंगा, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई वेरी ब्रीफली हियर. We can split the syllabus and then arrange the questions asked by UPSC from mains, for mains, let us say from 2013 to 21, chapter wise, यानी कि syllabus wise. So अगर syllabus हमें पता है, उसके chapters, main units, सब units अगर हमें पता है, तो उस हिसाब से हम सभी questions को arrange कर सकते हैं. तो सही में हमें पता चलेगा कि look, this is the paper, these are the subjects, this is the syllabus of each subject, and these are the units and subunits, and look, these are the kinds of questions, number of questions and kinds of questions which are asked by UPSC on each and every chapter, unit and subunit possibly. Okay, now let us take up that point, that is this is the 4th point, question paper analysis. Prelims का अब definitely कीजिए. Prelims का analysis का मतलब है खाली एक बार पढ़िए, एटलीस्ट खाली एक बार पढ़िए 2011 से लेकर 2021 तक. And we have come up with a very good book which is titled as Prelims Simplified by Saurabh Kumar. So you can make it a point to use that. Now mains. Now how are we supposed to analyze question papers? So analyzing question paper may seem a bit complex to begin with, लेकिन उसको सिंपल सा करते हैं. Let us simplify that. Okay, उसका फॉर्मेट क्या है? I have tried to put it as simply as possible. Year 2011 prelims के लिए है, 2013 mains के लिए, सबको पता है. So present format for prelims was introduced in 2011 and mains के लिए 13 को शुरू हुआ और 21 तक हमें करना है. अब वो लास्ट वाला एग्जाम था जनवरी 22 में हुआ था, लेकिन वो 21 का एग्जाम था. ओके, नाउ फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, और इवन यू कैन यूज द सिंपल वर्ड रीडिंग क्वेश्चन
पेपर्स, रीडिंग क्वेश्चन पेपर्स, लेट अस मेक दैट सिंपल। सो एक तो है ईयर वाइज, जो मैंने कहा कि 11 से 21 तक, 13 से 21 तक, ये ईयर वाइज पहला है। सो एक साल लीजिए, सभी पेपर्स पढ़िए, दूसरा साल ऐसा करके 21 तक आते हैं पेपर वाइज। वन, अब क्या होगा कि मैंने GS 1 का अगर लिया है तो GS 1 13 से लेकर 21 तक पढ़े, खाली GS 1 ही पढ़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज तो खाली हिस्ट्री का पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, सोसाइटी का पढ़ेंगे, पॉलिटी का पढ़ेंगे, IR का पढ़ेंगे। तो इथिक्स में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इथिक्स में आप चैप्टर वाइज भी अल्टीमेटली कर सकते हो। ओके, देन सेक्शन। नाउ इन फ्यू सब्जेक्ट्स we can split the syllabus into certain sections. For history, say for example, we have heritage culture, first section, then modern Indian history, then post-independent Indian history, and then the world history. तो ये 4 sections आप कर सकते हैं, तो वो तो पता ही चलेगा ना कि क्वेश्चन किस sections पे पूछा गया है। ज्योग्राफी के बारे में भी एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो सकता है, सेक्शनल क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलेंगे। एक one general classification scheme of classifying questions can be world geography, Indian geography, then physical geography, human geography. So as you go on understanding geography, make better sense of geography, you would be better placed to analyze it. And then topic and chapter wise, this should be the ultimate level. Okay, slab uska ultimate ये होना चाहिए. So if there are, let us say, 10 chapters, 12 chapters, 15 chapters in any paper or any subject, then I must be in a position to arrange those questions from 13 to 21 chapter wise. अब मानिए कि अगर इतना आपने किया है तो क्या होगा, तो आपको सिलेबस पता है हर एक पेपर का, हर एक सब्जेक्ट का। ओके, 1 2 आपने ये सब तरीके का क्वेश्चन पेपर रीडिंग क्या किया है, अंडरटेक किया है आप, तो आपको पूरा फोकस उसका क्लियर होगा कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट गिवन, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, उसका स्कोप क्या है। तो सिलेबस देखना उसका एक तरीका है, एक मीन्स है, और क्वेश्चन पेपर्स इस तरीके से देखना, ईयर वाइज, पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज wherever possible, and then ultimately topic wise. Anyway, you would get a book. This is mains essay and GS question paper analysis. You would get, don't worry about it. So what we have done in the book, we have included 2 parts. So एक तो part simple सा है, year wise question papers been included, printed in both the languages, English as well as Hindi. We have followed the UPSC pattern, plain question papers. And then in the first part, we have come up with the analysis, topic wise analysis of each GS paper. Okay, so you can rely on that, don't worry about that. Okay, but as of now, if you have question bank of the of mains examination, at least GS as well as SA, you can make it a point to just read the questions from 13 to 21. Method, ये फॉर्मेट मैंने कहा था, एक फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस, अभी उसका मेथड भी मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है, क्या है वो देखिए। इनिशियली इन जनरल बिफोर प्रिपरेशन, यानी कि आपका हुआ ही नहीं, शायद आपने देखा भी होगा। सो बिफोर यू एक्चुअली मेक अ हेड स्टार्ट, बिगिन योर प्रिपरेशन, सो वो तो सिंपल सा, एक बार पढ़िए। वंस अ सब्जेक्ट एंड टॉपिक इज टेकन अप, अब इवेंचुअली वंस वी are done with the demo lectures, the proper classroom teaching will begin, and once it gets started, you are supposed to come up with your own plan, and anyway going to discuss that. Say for example, if 4 papers are opened up, yani ki 4 subjects are opened up in order to as part of teaching, then of the 4 you can think of at least selecting 2 GS subjects and begin your preparation. Somebody may even think of going for 3 subjects. I'll discuss that, don't worry about that. Okay, so आपने तय किया है कि हिस्ट्री मुझे लेना है, पॉलिटी मुझे लेना है, कि जो क्लासरूम में शुरू हुआ है, तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री का क्या शुरू किया है, शायद मानिए कि मॉडर्न इंडिया का अगर सर ने शुरू किया है, तो मॉडर्न इंडिया का जो पहला टॉपिक है, ओके, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर्स, से फॉर एग्जांपल, अगर ये पहला चैप्टर है, तो उस चैप्टर पे 13 से लेकर 21 में कुछ है क्या, यानी कि
are questions asked? Okay, so this is how you can look into question papers, यानी कि questions on those subjects, okay, and topics. अब subject का topic क्या होगा? Initially topic होगा ना शुरू में तो हमारा. Okay. After completion of the teaching and study of the chapter, I'm not saying the entire subject, but the chapter. मानिए कि आपने फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन GS2 का जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पहला होता है चैप्टर, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर आपने ये तय किया है कि लेट मी इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इन माय प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज if you study modern Indian history first, then you would be better placed to make sense of the constitutional history. तो उसको दो इनिशियल चैप्टर को छोड़ देते हैं, मेकिंग ऑफ इंडिया को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम से पहले हुआ था. ओके, तो डायरेक्टली लेट अस स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेलिएंट फीचर्स आपने शुरू किया है. अब फीचर्स तो थोड़ा मुश्किल है, फीचर्स पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके थोड़ा आगे चले जाते हैं, प्रियम्बल होगा है. तो लेट अस फाइंड आउट एज टू how many questions and what kind of questions are asked on maybe features and preamble. For example, any other chapter from any other subject. So before you actually take up the chapter for preparation, make it a point to look into the questions, find out the questions. Now once you know in a preamble pe the अगर आपको पता ही है पहले ही. ओके, एनालाइज द आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल. ये भी क्वेश्चन हो सकता है. किसी ने कहा है, आपको पता चलेगा, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ही डिस्क्राइब प्रियम्बल एज आई कार्ड, सॉरी आइडेंटिटी कार्ड, नॉट आई कार्ड इज अ शॉर्ट फॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड इज द वर्ड. किसी और स्कॉलर ने कहा कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है प्रियम्बल. अब देखिए, अगर हमें ये पहले से पता है तो वी वुड बी वेल डायरेक्टेड एंड वेल गाइडेड. हमें पहले से पता है कि क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वी वुड बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हाइल लिसनिंग टू द क्लासरूम डिस्कशन, देन रीडिंग द NCERT book, that is the chapter on the same, and even the reference book as well as the class note. तो और ऐसे करते करते आपका चैप्टर खत्म हुआ है, टीचिंग भी हुआ है और आपने NCERT से पढ़ा है, रेफरेंस बुक से पढ़ा है और क्लास नोट से भी पढ़ा है. तो क्या करेंगे आप, आपको तो क्वेश्चन पता है, फिर से क्यों देखेंगे हम उसको? फिर से इसीलिए देखेंगे, आई हैव टू ट्राई टू आंसर दैट. सो कैन आई डू दैट? तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है. सो तो फिर क्या करेंगे? लेट अस गेट बैक टू ऑल दोज 3 sources, read the same chapter once again, for the second time, say for example, and while doing that you may come up with maybe, let us say, micro notes, short notes, and once you are done with that, you can certainly think of writing the answer. And initially, even if you follow something called as open book test, ये देख के लिखते हैं, सब सामने रखेंगे इधर उधर और यहाँ से कुछ लेंगे, वहां से कुछ लेंगे, ऐसा भी इनिशियली किया तो चलेगा. ओपन बुक टेस्ट बोलते हैं ना उसको. तो दैट इज ऑल्सो फाइन. So this is how you are supposed to plan your preparation. Okay, and we are discussing that in connection with analysis of the question. अब उसके आगे भी मैंने कुछ लिखा है. आप कहेंगे कि ये तो लॉजिकल एंड होना चाहिए कि पूछे गए जो क्वेश्चन है, हमारा प्रिपरेशन हुआ है, लिखा भी आंसर है, उसके आगे क्या है? देखिए, आफ्टर कंप्लीशन, वो तो मैंने लिखा है, विजुअलाइजिंग. नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज, विजुअलाइजिंग प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी चैप्टर पे, तो और वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू व्हाट, एंटिसिपेट, थिंक, विजुअलाइज प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, तो ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, डोंट वरी. हम शुरू में दिमाग में तो रखते हैं कि भाई ये हमें करना है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, एंड लेट अस सी हाउ इट अनफोल्ड्स in our preparation. Okay, so the fourth point was that of question paper analysis, which we discussed in two
parts. One, the format of doing question paper reading or analysis, and the second, the method. Okay, so initially before you start your preparation, then once you start your preparation, decide to take up a subject. So look into once again the questions, and then once you complete the subject, get back to the question and try to write the answer. And then ultimately, we will have to keep thinking about the prospective questions. Now the next point, fifth point, reference list. Let me be very brief, okay? Because anyway, each faculty would be sharing the reference list. You can confirm with them, and then you can rely on that. You don't worry about that. So NCERT textbooks, yes, must read. Let us not avoid that. Reference books, one reference book, at least one reference book for each subject, at least one. Okay. If you have enough time, and if second reference book is suggested or advised, do try to do that. Then the class notes. One, the static traditional class notes, in the sense class notes dealing with the traditional part. And then you would also get at regular frequency, at regular basis, even the current notes. Okay. So make it a point to look into those class notes and consolidate them. ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अगर हमें फॉर्मूला कहना है तो, और आप सबको पता है. It is to be kept in mind that rather than reading more references, it is always better to read selective books again and again. So बार बार क्यों पढ़ना है मुझे? Why am I supposed to read it again and again? तो एक सिंपल उसका आंसर है. So one answer is to consolidate that. Okay, मुझे कुछ शक नहीं रहेगा उसमें. I am in and out thorough as far as that topic is concerned. So I have read it so many times, 3, 4, 5, whatever it is. Okay, and consolidated it. I am now damn sure and confident about that. If you ask any question on that, okay, so I am ready for that. So that is one thing. Now the second thing is, as we were discussing a while ago as part of understanding, if you read a write-up for the second, for the third, for the subsequent time, then you are likely to get to know the meaning of the same, which you might not have understood while reading the same stuff 3 times even. उसके बाद रीड करने के बाद पता चलेगा, अरे ये तो मुझे दिमाग में ही नहीं आया था, अभी आया है मुझे. So to go deeper, deepen one's own understanding. So वो comprehension का दायरा जो बढ़ाना है मुझे, उसका डेप्थ जो बढ़ाना है, दोनों भी है उसमें. तो वो करने के लिए मुझे बार बार रिविजिट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. So revision is going to play, again I am using the word critical role as far as the preparation is concerned. Now this is important. Now the 6th point, planning. Yes, for sake of convenience I am saying 2023. 2023 का attempt हमारा होगा. I am just assuming that. So how are we supposed to plan the coming 1 year? 12 months. Okay, roughly 12 months, 12 odd months. 8 months for mains. Okay, and then 4 months, 4.5 months, whatever, for prelims. And then importantly, we are going to start with the mains preparation. That is quite clear. जिसमें GS है, essay है, current events and optional है. Okay. Now, as far as your daily and weekly plan है, let me discuss few formats here. So broadly ये तो ऐसा होगा कि 14th of June, okay, यानी कि कल से 15th of January, okay, if we are targeting 23, okay, 2023, तो उसका schedule ऐसे होना चाहिए. From 14th of June till 15th of January, we are supposed to complete the mains preparation, including all these components: GS, essay, optional, obviously including the current event. Okay, तो इतना समय हमें मेंस के लिए है. उसके बाद maybe 16th of January till May end. Okay, you are supposed to exclusively prepare for your preliminary examination. Okay, that is one. Number 2, अब उसका प्लान कैसे होना चाहिए? And I am going to assume another thing, that is you are a full timer.
because full timer ही 23 का target रख सकते हैं. Okay, so that is the another assumption. Okay, now if you are targeting 24, then you have to have a different plan. You don't worry about that. You can just extend whatever I am going to discuss. आने वाले 2 महीनों में जून तो आधा खत्म हो चुका है. So 14th of July तक 1 महीना होगा, till 14th of July. And even if we are going to start from 8th of August, as far as the optional teaching is concerned, it is still going to take 2 more weeks after that to get it routinized. So आपको 2 महीने definitely मिलेंगे. Okay, so in 2 महीनों में, in coming 2 months, try to get good grasp of the GS. वो जो भी मुझे टेक्निक थोड़ा डेवलप करना है, जो भी बातें करंट का मुझे रेगुलराइज करना है, प्लान मुझे रेगुलराइज करना है, तो वो हम 2 महीनों में एक्सक्लूसिवली जीएस के रिलेटेड ये कर सकते हैं. एंड यू आर सपोज टू डू दैट इवन इफ यू हैव फाइनलाइज योर ऑप्शनल. प्लीज डू नॉट यूज मच ऑफ योर टाइम. हाँ, आपको अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ना है आपके ऑप्शनल का, तो वो जरूर पढ़िए, या एक आध दूसरी किताब हो सकती है, लेकिन try to ensure that the coming 2 months would be exclusively used for the GS. Okay, so that is one. Now, how am I supposed to frame my weekly and daily plan? तो वो कैसे होना चाहिए? So 8 months, 4 GS papers, roughly 2 months for each paper, and roughly we have 2 subjects. I'm putting it roughly. In GS1 we have 3 subjects, but importantly history followed by geography and then society. तो 2 में उसको हम definitely convert कर सकते हैं. तो let us do in the following manner. Number 1, as I stated earlier, if 3 to 4 subjects are taken up for teaching, out of the 4, you can think of taking up at least 2 subjects. And if you are thinking of taking up 2 subjects as part of your plan preparation, then those 2 subjects need to be major GS subjects. Now, what subjects do we have as major subjects in GS? You know that history, geography, polity, economy. Now, ethics तो major है ही, और anyway ethics का मैं थोड़ा अलग तरीके से उसका बताऊंगा. You don't worry about that. So if you are thinking of taking up, that is begin your preparation with 2 subjects, 2 GS subjects, please take up 2 major GS subjects. At least I am saying format 1. अब उसका planning कैसा होना चाहिए? Let us keep aside Sunday and plan for 6 days. So 2 subjects, Monday to Wednesday, 1 subject, and then similarly Thursday to Saturday, another subject. Say for example history followed by polity, or history followed by economy, whichever. So 2 subjects, 3 days. Now, for how many days am I supposed to do this? At least 2 months. Okay, and definitely in the coming 2 months you would be in a position to complete, if not the entire syllabus of both the subjects, both major subjects, but I can assure you that you would be in a position to deal with, complete, understand at least the core chapters of the given subject. Core chapters. अब constitution के core chapters क्या हो सकते हैं? आप preamble से शुरू कीजिए. Preamble, fundamental right, directive principles, federalism, parliamentary system, judiciary, पंचायती राज. ये core chapters है. अगर मुझे ये समझ में आया, और मुझे लगता है कि 2 महीने में ही definitely हो सकता है. You don't worry about that. Okay. So आने वाले 2 महीनों में 2 मेजर सब्जेक्ट्स का एक फॉर्मेट है. हफ्ता 2 हिस्सों में बांटना है, 3-3 दिन. ओके, दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, एज पार्ट ऑफ द सेम फॉर्मेट, रिवीजन इज गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल हियर. ओके, सो 3 दिन 2 महीनों के लिए मुझे करना है, और बाद में मुझे क्या करना है? सब्सिक्वेंटली आई विल टेक अप 2 अदर सब्जेक्ट्स इन द कमिंग स्लॉट ऑफ 2 months. नंतर मला 2 महिन्यात दुसरे विषय मला घ्यायचे ना. सो अदर 2 major GS subjects. Okay. Now the second thing, how am I supposed to plan my day? So classroom teaching 2 hours,
आपका आना जाने का 1 घंटा उसमें ऐड कीजिए, 3 hours, 2 hours रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड द रिमेनिंग 5 to 6 hours, Monday to Wednesday history, and Thursday to Saturday another major GS subject. Okay, this would be your daily timetable as well as weekly timetable. So 3 घंटे क्लास के लिए, 2 घंटे न्यूज़पेपर के लिए, और बचे हुए जो है बाकी, okay, the remaining slots maybe 6 hours or maybe 7 hours, but I would say in the range of 5 to 6 hours. So 3 दिन एक सब्जेक्ट, दूसरे 3 दिन में दूसरा सब्जेक्ट आपको करना है. Okay, so daily as well as weekly timetable. Number 3, revision is going to play a very significant part here. So I keep on telling this to all students. There can be 3 formats of taking care of revision. So on daily basis, you can use a slot of 30 minutes before you go to sleep. Okay, सोने के पहले आप एक आधा घंटा भी दोगे, तो जो आपने उस दिन पढ़ा है, तो उसको रिवाइज डेफिनेटली आप कर सकते हो, मे बी 30-40 minutes. Okay, method 1. Second method, if you have split week into 2 parts, तो हर Wednesday आप you can think of reserving a slot of maybe 1 hour, maybe even 1.5 hours, maybe sometimes 2 hours to revise history you might have read on Monday, Tuesday, and remaining slot of Wednesday. So, and same is to be done for second subject on Saturday. तो Saturday 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी हम रख सकते हैं. तो ये दूसरा मेथड है रिविजन का. ओके, और तीसरा मेथड मैंने संडे उसी चीज के लिए रखा है. तो संडे तो आपको रिवाइज ही करना है. ओके, you can come up with 2 slots, one for the first subject, the second for the second subject. लेकिन और एक चीज संडे कीजिए, संडे सप्लीमेंट जो न्यूज़पेपर का होता है, तो go for reading the entire supplement, even if so many articles, news items from the supplement may not be directly related to your syllabus. Okay, आप उसमें बुक्स के रिव्यू हो सकते हैं, मूवीज के रिव्यू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें. Let us make it a point to consciously read the Sunday supplement, okay, for the purpose of what? Developing the language and articulation skill. क्योंकि अगर ऐसे मुझे लिखना है या इथिक्स के कुछ क्वेश्चंस मुझे लिखने हैं, तो मुझे खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का लैंग्वेज ही फैमिलियर होना चाहिए ऐसा नहीं है. तो बाकी मेरा जिसको हम कहते हैं ना फिक्शन, लिटरेरी लैंग्वेज है, तो वो भी मुझे पता होना चाहिए. अगर मुझे जनरल कुछ लिखना है, तो उस टाइप का मेरा लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए. सो मेक इट अ पॉइंट टू रीड संडे सप्लीमेंट थॉरली. तो वो एक हिस्सा होगा, और बाकी हिस्से आप 2 सब्जेक्ट में रिवीजन के लिए कर सकते हैं. सो डेली हाफ एन आवर रिवीजन using 1 or 1.5 hour on 2 days after 3 days, say for example Wednesday as well as Saturday. And then importantly, I'll get back to that, Chitra, I'll get back to that, don't worry about that. And then third, using Sunday for the purpose of revising whatever you would be reading. Now along with revision, there is another important component, and most of us have a sort of anxiety about that. Questions, queries, okay, that is the note making exercise. Again I keep on telling, let us not think of making note without reading any stuff at least twice. Okay, अब यहाँ तो क्या होगा, आप सिलेबस की पढ़ाई शुरू होने से पहले आप रीड करना शुरू करोगे from say NCERT, you know the reference book. Okay, number 1. And once the chapter is taken up for discussion, you can make it a point to read that chapter in a topic wise format. From NCERT, the same topic, then from the reference book, same topic, and then from the class note, the same topic. So one round हुआ अगर आपका, तो उसका मतलब ये हुआ कि you have read the same topic from 3 sources. Okay, यानी कि 1 round हुआ है. Then also go for second round again from the same sources. So 2 rounds यानी कि 2 readings of each source. 6 बार आपने एक ही चैप्टर पढ़ा है,
तो बाय देन यू वुड बी बेटर प्लेस टू अंडरस्टैंड कि उसमें है क्या, आपको पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए. And if in case you are not able to understand some component, some what principle or dimension, whatever it is, make it a point to get it clarified from the concerned faculty. उसको पीछे मत छोड़िए, get it clarified as early as possible. That is what I would say. So ये 2 राउंड अगर हमारे हुए हैं, हमने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, हमें पता भी चला है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसके बाद आप माइक्रो नोट निकालने का सोच सकते हो, बनाने का सोच सकते हो. एंड यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट डू दैट. द ओनली क्वेश्चन वुड बी कि जल्दबाजी मत कीजिए. ओके, थोड़ा ज्यादा पढ़िए और उसके बाद फिर लिखना शुरू कीजिए. ये एक क्वेश्चन होगा. दूसरा, इतना सब सुनने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल लिखना चाहिए, so then write it down, don't worry about that. Even if it consume slightly a bit of a more time, let it be, don't worry about that. आपको खुद को पता चलेगा 1-2 चैप्टर्स के नोट निकालने के बाद कि नहीं, ये थोड़ा डिटेल हुआ है. तो so that sense of understanding has to be developed, and unless and until we actually take up that exercise, it is very difficult to get to know that. So don't worry about that. So take certain precautions as I stated, and then start making notes, but without reading any stuff at least twice. Let us not make it a point to make micro notes. Micro notes are going to play, again I'm using the word critical, are going to subsequently play critical role throughout your preparation, especially the mains examination. That may help you in better writing the answer, ensuring substance in your answer, sharpness in your answer. Okay, sharp कब कहलाएगा आंसर हमारा, अगर पूरे पॉइंट्स उसमें है तो. dense कब कहलाएगा, so whether my answer is dense or not. If I have included every stuff in the answer, then and then only my answer would seem dense. सब लिखा है आपने, सब include किया है. Okay, so good appropriate micro notes, okay, would help you a lot in so many departments, let us say. And then the most important significance, importance, or use, let us say, utility of micro notes is to be able to revise the vast syllabus in minimum amount of time. ये तो micro notes के सिवाय नहीं हो सकता है. So this is what I would suggest. Okay, now moving on to the very important aspect, preparation. Sorry, before that let me also share the second format. Okay, तो 8 महीने 2 subjects, 3 दिन 2 महीने, उसके बाद subsequently you will go for 2 more subjects. This is how you are supposed to follow the format. Now you can also think of a third format, second format. सेकंड फॉर्मेट, मैंने पहला फॉर्मेट डिस्कस किया, खाली 2 सब्जेक्ट के बारे में मैंने कहा कि 2 सब्जेक्ट आप शुरू करने का सोचिए. सेकंड फॉर्मेट कैन बी, you can think of taking up 3 subjects. Okay, अब 3 में 2 उसके मेथड्स हो सकती है या 2 उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. 2 मेजर यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से कुछ भी हो सकता है. और तीसरा हो सकता है ethics, because anyway you would be introduced to ethics in the first, that is the initial phase of the classroom teaching program. And we are going to have more lectures in a slot, so that you can complete entire paper in a continuous way in minimum amount of time. You don't worry about that. So you can think of going for ethics. Now ethics, if you look at the peculiarity of the ethics, you are not supposed to read some 900 pages, 1000 pages, not at all. There are no per se facts beyond a limit, data beyond a limit. So ethics में आपको conceptual understanding essential है. दूसरा, the philosophies of the Indian philosophers as well as the Western philosophers, understanding of grasp of the philosopher, of the philosophy, that is important. So ethics substantially rests on conceptual and theoretical understanding. Okay, so उसके लिए बार बार तो पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन it substantially depends upon the
conceptual and theoretical understanding. If you look at economy, if you look at polity, if you look at history, तो आपको इतने सारे facts देखने पड़ेंगे, consolidate करने पड़ेंगे, which would subsequently consume lot of your time, lot of energy, lot of your efforts. This is not the peculiarity of ethics. So कम समय में आपका बहुत ही अच्छा preparation ethics का definitely हो सकता है. ये पहले दिन से याद रखिए. So second format में एक type हो सकता है, 2 major, दूसरे कोई भी subject लीजिए, और तीसरा सब्जेक्ट इथिक्स हो सकता है. और बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं 3 सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा ही हो रहे हैं, तो ड्रॉप द अनदर मेजर जीएस, कंटिन्यू विथ 1 मेजर जीएस फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अलोंग विथ इथिक्स. ओके, लेकिन वो दूसरा टाइप मुझे बताना है, सेकंड फॉर्मेट का दूसरा टाइप, वो क्या है? थिंक ऑफ 3 सब्जेक्ट्स. ओके, 2 मेजर. अब 2 मेजर कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री इथिक्स भी हो सकता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी इथिक्स भी हो सकता है, पॉलिटी. 2 मेजर. ओके, एंड द थर्ड सब्जेक्ट कैन बी विदाउट एनी प्रॉब्लम सम minor GS subject such as Indian society. I'm looking at society as minor in terms of just the UPSC weightage. Okay, then IR, internal security. Okay, so and so forth. So there are certain minor subjects in our syllabus which can be taken up, okay, as the third subject along with 2 major subjects. So that can also be certainly done. You don't worry about that. So होता है कि मानिए कि सोसाइटी के 8 या 10 लेक्चर्स है. So even if you keep on reading sociology along with the classroom teaching, then maybe after the 2 hours class, if you give same amount of time in order to consolidate sociology, तो 10 घंटे into 10 सेशंस into 2 hours, so 20 hours में 25 hours में आपका सोसाइटी खत्म हो जाएगा. So this is how you can definitely go on consolidating more and more syllabus of GS. So let me conclude here. One format, the first format of just taking up 2 major subjects, and the second format in which we've discussed 2 types or 2 versions, let us say. So one going for 3 major subjects including ethics, or going for 2 major subjects along with 1 minor GS subject. आप इसका मत सोचिए कि which of the 2 formats is the best format. There is nothing called as best format. Whatever suits you, okay, that would be that is to be the best format. और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ और कॉम्बिनेशन करके आपका एक खुद का थर्ड फॉर्मेट हो सकता है. You don't worry about it. And without spending much of your time, let us take up one format and then start with that. Okay, so this is what I can say about the planning. One last thing about the planning, 8th of August onwards, okay, you will have to come up with a different timetable, 4 days for GS and 3 days for optional. Because once the optional is introduced, then you are supposed to utilize at least 3 days from a week to consolidate the optional subject. तो ये थोड़ा सा चेंज होगा. जो 24 में लिखने वाले हैं उनका तो आसान हो जाएगा. You don't worry about that. But those who are going to write, are going to target 23, they have to keep in mind that mid-August onwards, your week would be split into 2 segments, one GS and other would be the optional. And this is how you would continue the journey of mains preparation till maximum 15th of January, not beyond that. क्योंकि 4 या 4.5 महीने तो हमें प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए लगेंगे ही लगेंगे. Okay, so that is all. Now look at the last part, that is the preparation part. There are few very primary precautions to be taken. Okay, reading from all sources, absolutely part of code of conduct. Now 3 aspects of comprehending subject, I did make a mention of that a while ago. Concepts, yes, without conceptual understanding we cannot think of having a good grasp as far as a given subject is concerned. Okay, so history, economics, हर एक subject में concepts है, and NCERTs are going to help us a lot and important in the classroom discussion. So whenever the faculty makes it a point to explain a concept, let us be attentive.
get back to NCERT books, okay, and then consolidate the conceptual part of each and every subject. I would advise once again to get back to the questions. Now, if you check out even GS1, there was one question, and let me put it in a very simple manner. Question था किस पे? French secularism and Indian secularism पे question था. French socialism and Indian secularism पे question था. I am putting it broadly. Now, that question required understanding of both the notions of secularism, French as well as Indian notion of secularism. Now, secular का मतलब तो हम जानते हैं मोटे तौर पे in general. Secular means division between religion and politics. Politics and religion, or state, government, politics, public sphere on one hand, and the religion on the other hand. So separation is there. Number two, religion shall be considered as sheerly, okay, essentially the individual, personal, private, okay, whatever it is, phenomena. Number two, so वो आपका personal matter होगा. Number three, state shall not encourage, propagate, okay, any particular religion, and state also shall not discriminate between individuals or citizens on the basis of religion. Okay, so these are the basic fundamental essential elements of secularism in general. लेकिन जब आप थोड़ा डिटेल जाओगे, अब इंडियन सेक्युलरिज्म की तरफ मुड़िए, तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं, besides these essential elements of secularism, there are few more aspects. Now, which are those aspects? आपको सबको एक पता है कि सर्वधर्म समभाव, equal regard for all religion. Now, in Western notion, you would not find out this way of looking at secularism. Now, what is this equal regard for religion, and why do we have that? I think this tells us the very first difference between the Western and the Indian, because ours is a religiously plural society. We do have religious plurality, therefore many religions. Equal regard for all, ये all क्यों है? All का मतलब ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है. So जितने भी है, एक से ज्यादा है, और जितने भी है उसको स्टेट को इक्वल रिगार्ड देना पड़ेगा. So state shall exercise what principle while treating all religions? The principle of equality. It shall not discriminate between religions. Okay, so क्योंकि यहाँ प्लूरलिटी है, वेस्ट में इस टाइप की प्लूरलिटी नहीं है, वेस्ट में इस टाइप की प्लूरलिटी नहीं है. ओके, जनरली now the social composition even of the Western society has undergone a change in last maybe let us say 50-60 years, and importantly after the disintegration of Soviet Russia and end of Cold War, with impetus received to the process of globalization. तो composition बदला है, लेकिन broadly क्या कहा जाता है कि Western societies are monolithic societies, mono-religious societies, एक ही religion है, ऐसा कहा जाता है. अब ये भी बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग है, बट आई एम पुटिंग इट इन अ वेरी क्रूड वे. तो यहाँ प्लूरलिटी है, इसीलिए इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल रिलीजन्स. दूसरा एक देखिए, इन इंडियन नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म देयर इज अनदर इनबिल्ट पार्ट एंड व्हिच इज सीन एज द सेकंड पेक्युलरिटी ऑफ इंडियन नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म व्हिच डिफरेंशिएट्स us from them. Okay, ये differentiation वो क्या है? The rights of the minorities. And there are two types of minorities which are recognized by Constitution of India. One is the linguistic minority and second is the religious minority. So आप कहीं पे भी जाइए, वेस्ट में जाइए, do they have minority rights as the part of secularism? No. Now, why do we have that? All of you know the answer. Why do we have minority rights as part of the secular arrangement? क्यों है हमारे यहाँ? आप सबको पता है, we were a multi-religious society dominated by the colonial regime. Okay, during colonialism we know for sure,
And then a problem erupted in modern Indian history. That problem is known as the problem of communalism, where the British colonial regime started or began to use the instrument of religion for political purposes in different ways, direct, indirect. Now you look at partition of Bengal. It was a direct attempt on part of the colonial authority to divide the society along the lines of religion. But there were so many subtle ways, indirect ways, invisible ways, micro ways, as let us say, which are not otherwise visible, very visible. So such ways also were used by the colonial authority to divide us on the basis of religion. So dividing people and telling people that your religious identity happens to be the fundamental identity. So people can be understood, okay, because people can be understood, people can be seen as constituting a different community because they belong to different religions. So what happens to be the dividing line? The religion happens to be the dividing line. And not only that, you are also made to think that your material interests can only be what? Safeguarded if you organize yourself on the basis of religion. So this is here we come to see use of religion for political purposes. So material क्या है? Material religious है या political है? Material. So one is the religious and other is the material. उसको हम non-religious भी कह सकते हैं, उसको हम political भी कह सकते हैं, broadly. Okay. So the moment you start using religion for non-religious purposes, political purposes, okay, material purposes, then it constitute communal act. And the utmost manifestation of communal act constitute or is known as communal rights, where people kill other people who belongs to a different religion, assuming that they are our enemy because they belong to different religion. So this was the menace of or the problem of communalism which emerged in modern Indian history. This is what argued by Bipan Chandra, who happens to be a very important authority on modern Indian history. Now, what happened to this communal problem? Now, you would read 1909 Act. You would also look into 1919 Act, 1935 Act. These acts, okay, which were very, very important in evolution of political setup in India, though before independence. Okay, colonial India, let us say. And these acts and first act, that is the 1900 Act, introduced, all of you know that, introduced what? The communal electoral system. यानी कि आपके कम्युनिटी के आधार पे, रिलीजन के आधार पे आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था. This is how the problem of communalism was made as part and parcel of the structure of Indian political system. And subsequently, उसमें हमारा भी दोष है, national movement का दोष है, society का दोष है. How did we respond to that problem of communalism? Okay, to cut it short, we will discuss that at length as part of modern Indian history discussion. National movement as well as we as a society failed in dealing with the problem of communalism, and ultimately what happened? Partition of India took place on the basis of religion. Now, when the partition of India took place, okay, then what happened? Our society straightway got divided into majority on one hand and the minority on the other hand. And though the two-nation theory put forth and justified by Muslim League, then Jinnah, okay, what adopted and then Pakistan was demanded, it's not that all Muslims decided to go to Pakistan. Okay, substantial amount of the section of Muslim community decided to be part of the independent, that is the free Indian nation state. Now, by that time, the task of the process of writing constitution had begun, and the constitution makers had to reflect on the
the problem, the partition, the communal rights, and the whole issue of the protection of rights of the minority. I guess this is the particular historical context of the formation of Indian independent nation state, which made us to make the rights of the minorities as inbuilt part of the secular arrangement. Okay. So this is the second one, and last one. Now I'm elaborating upon this aspect because somewhere I expect you to pay attention to the conceptual part, because if we are not aware of the concepts, okay, then it would be very difficult to answer such questions, the one which I just referred to. And last one is, now what kind of separation of what kind of separation do we have between state government politics on one hand and the religion on the other hand? What kind of separation do we have? Is the separation between the two like a wall? Do we have a wall-like separation between the two? We do not have. Now it is generally argued that in West, there is a wall-like separation. Okay, we will have to qualify this understanding later on. You don't worry about it. But generally, I am putting it, there is a wall-like separation. But in our case, it doesn't happen to be a wall-like separation. You know it for sure. Our state, can Indian state interfere in the religious affairs? Yes, absolutely yes. How can it interfere? If secularism is about division between the two, then how can Indian state, Indian government, Indian authorities interfere there? Now, by applying the logic of CSAT, you can definitely say here, क्योंकि हमारे यहाँ wall like separation नहीं है, हमें ज़्यादा पता भी नहीं, तो इतना तो कह सकते ना हम, because we do not have wall like separation. Now, if we do not have wall like separation, उसका मतलब है कि state must be having some authority to interfere in the religious domain. And anyway, you are a few of you would be aware of this, whatever I am discussing, and you don't worry about that. Eventually, you will get to know about that. Okay, what is that? If you read Article 25, which gives us right to religion, conscience, profess, practice, and propagate religion of your choice. Okay, ये बहुत ही keywords है उसमें. तो उसी राइट टू रिलीजन का प्रावधान करने वाले आर्टिकल 25 में एक्सेप्शन भी है. अब उसका एक्सेप्शन क्या है कि यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिलीजन, ओके, राइट टू कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, सो एंड सो फोर्थ, बट दैट राइट इज नॉट एब्सोल्यूट. नॉट एब्सोल्यूट का मतलब दैट राइट इज नॉट विदाउट लिमिटेशंस. द राइट कैन बी लिमिटेड. ओके, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट टू रिलीजन दिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं. कैन आई से दैट? बिकॉज every constitutional right in general has come with or along with limitations. Okay, and the logic, the reason for which, the ground on the basis of which Indian state can interfere in your religion, religious affair, right to religion, and those grounds are public order, okay, then morality, and then importantly, this is written in Constitution of India, if state wants to throw Hindu religious institutions open for the purpose of religious reforms, then also the state can interfere in the religious affairs. Okay, now say for example, if your right to religion and some practice which is part of right to religion is creating problem for the law and order, then state is precisely legitimately justified in interfering your right to religion. ये नहीं चलेगा भाई, ऐसे कैसे होगा, law and order का problem है, तो state आ सकती है, interfere कर सकती है. अब शबरीमाला का recent judgment आपने शायद पढ़ा होगा, शबरीमाला 2018, okay, where women were not allowed to enter the sanctum sanctorium. So a few women approach court, and Supreme Court of India give the judgment allowing women to enter that place in the temple.
and that was done by using the principle of equality. The principle of equality, and then the court also argued that even women do enjoy the constitutional right to religion. उनको भी है ना, अगर उनके right to religion के तहत उनको लगता है कि हमें जाना है वहां, तो they have every right to do the same thing. And a very interesting term which was used by court, even in earlier cases also, court had used that term, principle or doctrine, that is constitutional morality. Okay, so there are different forms of morality. हम कहेंगे कि हमारा people का एक morality है, majority का एक morality है. So every now and then we'll say that we are majority, so we got our own morality. कोर्ट ने ये सुना दिया उनको कि भाई हमारी भी एक मोरालिटी है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. सो कोर्ट इन शबरीमाला जजमेंट डिफरेंशिएटेड बिटवीन पब्लिक मोरालिटी, ओके, एज अ मेजॉरिटी, यानी कि लार्जर है, उसका मतलब आप जो भी मोरालिटी का क्लेम कर रहे हो वो सही है ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज there is something called as constitutional morality. There are certain principles, there are certain values which are there in Constitution of India, which cannot be allowed to be encroached upon in the name of public morality. Okay, so this is how it differs. Last year, there was a question in GS2 on constitutional morality. तो इसीलिए ये conceptual understanding, so थोड़ा आपको लगेगा कि ये पहले दिन ही क्या चल रहा है, तो this is going to be essential for you, don't worry about that. So we just at a very primary level try to understand as to what are the differentiating features of Indian secularism. So we are a multi-religious society, therefore we have equal regard for all religions. We had a peculiar history of partition, therefore we have the provision of what? Safeguard of minority rights. And then third, we are still deeply a religious society. And our state, forget state, our constitution had to recognize the fact that कि भाई सेक्युलरिज्म में तो हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि रिलीजन तो आपके प्राइवेट लाइफ का मैटर होगा. ये है ना सेक्युलरिज्म में एक बेसिक जो एक्सपेक्टेशन अंडरस्टैंडिंग है कि डिवाइड है, और डिवाइड के बाद क्या कहा गया है कि रिलीजन शैल बी योर प्राइवेट पर्सनल इंडिविजुअल मैटर. लेकिन ऐसा था नहीं सोसाइटी में, और अभी भी नहीं है. क्या नहीं था? कि रिलीजन बीइंग only the personal of what matter. Is religion personal matter still today? Was it personal matter even in the past? No. Religion in our society, okay, since so many years, okay, been enjoying sizable presence even in the public life. Therefore, बहुत सारे पब्लिक पूजा भी होती है ना. अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पंढरपुर जाते हैं, ओके, ऑफिशियल पूजा होती है. हज को कोई असिस्टेंस दिया जाता है, ओके, एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, कुंभ मेला, so on and so forth. Okay, now what is this? Now let us keep aside the politics out of that. यानी कि just I'm saying that for sake of convenience, we can't do that, I know that. Okay, what I'm trying to say is our constitution had to recognize that even though we want religion to be personal matter, it can't be so, at least in coming years, because religion does enjoy a sizable presence in our public life. And I guess somewhere the constitution and the state had to admit that and recognize that. अब आप कहेंगे कि सर फिर वो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है, बाद में पढ़ेंगे आप, राजू भार्गव. ओके, he argued that Indian secularism is not a fixed notion, something scientifically defined, objectively defined. वैसा तो नहीं है. तो उनका क्या कहना है? ये कॉन्सेप्ट ही निगोशिएटेड कॉन्सेप्ट है. तो शबरीमाला में क्या हुआ? विमेन ने कहा कि नहीं हमें भी चाहिए. सो इट वाज अ निगोशिएशन. ओके, तो स्टेट और सोसाइटी के बीच में निगोशिएशन होता है,
सोसाइटी के अंदर भी निगोशिएशन होता है, और निगोशिएशन 2 रिलीजन्स में हो सकता है, 2 रिलीजन से ज्यादा लोगों में भी हो सकता है, निगोशिएशन विद इन रिलीजन भी हो सकता है। अब शबरीमाला का तो 2 रिलीजन में निगोशिएशन नहीं था, एक ही रिलीजन में था। So this is how, according to Rajiv Bhargav, who happens to be a very significant authority on Indian secularism, he argued Indian notion of secularism is not a fixed scientifically determined notion, it is a negotiated notion. Negotiation उन्होंने एक उसका important aspect कहा था, बाकी aspect है वो बाद में हम definitely discuss करेंगे. So मुझे ये कहना था कि concepts are going to play a very significant role. And don't worry, for conceptual clarity, as I stated earlier, let me repeat it once again, NCRTs and then the classroom teaching. These are going to be the initial 2 sources, I would say. Newspaper में, for example, Express में बहुत सारे simply put explained में जो column होता है उसमें concepts दिए जाते हैं. So let us make it a point to pay attention to those concepts. Information, facts, data, yes, that is going to play a very significant role. Right from day one, we'll read that part very carefully. Data, factual, informative part. Process it appropriately. Okay, let us process it. ध्यान से भी पढ़ना है और उसको अच्छी तरीके से मुझे प्रोसेस करना है, लेकिन मुझे ये भी मालूम होना चाहिए और सबको आपको पता है वो कि since this is a factual and informative part, I am likely to forget it just say after 2-3 days or 4 days or maybe weeks से पढ़ता है. And let us not be worried about that. Let us not be worried about that, because factual part is that part which you are anyway going to revisit again and again as part of revision. And if you divide, separate or distinguish, let us use the word distinguish between mains and pre, then generally I am putting it, the factual part is to be consolidated primarily for the preliminary examination. तो हम जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करेंगे से फॉर एग्जांपल, तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, क्लास नोट पढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, फैक्चुअल पार्ट बहुत सारा होगा उसमें, लेकिन दिस वुड बी माय हम्बल रिक्वेस्ट नॉट टू इन्वेस्ट योर एनर्जी एफर्ट इन कंसोलिडेटिंग द फैक्चुअल पार्ट राइट नाउ. डोंट डू दैट. ये तो आपको लेके नहीं मुझे वो 20 पेजेस का 25 पेजेस का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का या क्लास नोट का मुझे अभी खत्म करना है पूरा. मुझे I must be in a position to remember every aspect, every factual detail. Let us not do that. और ये थोड़ा बाद में भी हो जाएगा. And therefore, looking into previous year question papers of prelims as well as mains is very important. तो आप देखिए कि पॉलिटिका मेंस की पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करना एक अलग बात है और प्री की हिसाब से पढ़ाई करना वो एक अलग बात है. तो इसीलिए वो जो फैक्चुअल पार्ट है अभी तो हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये फैक्चुअल पार्ट है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है. आई एम लाइकली टू फॉरगेट इट, ओके, एंड ये होने वाला है, यू डोंट वरी अबाउट दैट. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट का फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव पार्ट आपको इवेंचुअली पता चलेगा और उसको हाउ कैन वी प्रोसेस एंड देन सब्सिक्वेंटली रिप्रेजेंट दैट, maybe in a diary format, in a pie chart format, in a tabular format, whichever technical format you want to use, let us use that, okay, and try to process it so that you can revise that subsequently whenever the exam is around the corner, multiple times in a small amount of time. वो जितना हमें अच्छी तरीके से प्रोसेस करना है तो बाद में हमें थोड़ा सा आसान रहेगा. Current and contemporary events, Jawad Kaji sir would anyway talk to you, don't worry about that, how to approach current events, what sources are to be used. But as of now, I'll say that keep it minimum or limited to only 2 hours. 2 घंटों का या 2 या 2.5 घंटों का, उससे ज्यादा आप मत लीजिए. Classroom teaching, so we'll have 1 lecture in a fortnight. Notes would be made available, you don't worry about that, okay. Now micro notes के बारे में तो मैंने पहले ही कहा है, so that is going to be important part of your journey. Then revision, yes, I did talk about even the revision, the 3 methods of revision, okay. Now answer writing.
while explaining the question paper analysis, one of the important stages I did refer to this. So once you finish a chapter of a subject, यानी कि आपने you went through 3 sources, okay, made 2 rounds, came up with micro notes, looked into the questions appeared of the same topic in previous years, okay, and then you decided to write answer. Even if initially open book test, do that, don't worry about that. Anyway, each faculty would make it a point to talk about and assist you in regard with answer writing. Okay, so few model answers also be made available, you don't worry about that. Okay, जो टेलीग्राम का चैनल होता है उसमें जो टॉपर्स होते हैं उनके जीएस के एसए के पेपर जो उन्होंने लिखे होते हैं और एसेस किए हैं, including this year's toppers, would be made available, you don't worry about that. Okay, so after completing chapter as per our code of conduct, take 1 or 2 questions, okay, and make it a point to write answer. Do not be satisfied with the very first draft of your answer. Go for, that is, think of writing the second draft, maybe third draft, okay, and let it take maybe 1 hour, 1.5 hours, maybe 2 hours. So I'm writing one answer and I have almost expended 2 hours. Let it be, don't worry about that. However, the practice would help you a lot in having that idea, getting that technique, which is very, very important. And you will have to expose yourself to this kind of exercise. वो तो आपको करना ही पड़ेगा और वो definitely कीजिए. Okay. And once you are satisfied कि भाई ये मेरा second draft या third draft है, I am done with that. This is my best answer as of now. You can submit it to faculty and get it assessed. Okay. So answer writing के 2 format है. एक format है micro notes. Okay. So one format would be the micro notes, and the another format actual writing answer practice. Answer writing के practice में जैसे मैंने कहा है कि उसको थोड़ा मैं अलग तरीके से कहूँगा. Not think of writing answers before you put in essential efforts. जो कोड ऑफ कंडक्ट मैंने कहा कि सभी सोर्सेस से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, माइक्रो नोट्स निकालिए और फिर ओपन बुक टेस्ट भी लिखना है तो वो लिखिए. एक बार लिखा आपने कहा कि हाँ ये सर असेस करके दीजिए, वो मत कीजिए. थिंक ऑफ अ सेकंड ड्राफ्ट. यू बिकम योर ओन एसएससी इनिशियली. लेट अस से देखते हैं कि क्या होता है. सो लेट अस फॉलो दैट फॉर्मेट. ओके, अब ये सर्च फॉर क्रिएटिविटी एंड नॉवेल्टी, अब ये पहले दिन से तो नहीं आएगा, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड दैट सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, सम काइंड ऑफ नॉवेल्टी हैज टू बी इन योर प्रिपरेशन. बोथ the process of understanding at one level and subsequently at the level of writing answers. दोनों लेवल पे, पहले लेवल पे अगर होता है तो it is likely to be ensured at the second level. अगर हमने पढ़ा ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं दिया तो आंसर्स में कैसे आएगा वो. अब ये क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, नॉवेल्टी क्या हो सकती है. जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग. नाउ most of us are confronted with a problem, how to introduce answer and how to conclude answer. Okay, let us keep aside the introduction part as of now. Let me focus on conclusion. So in many answers, if you have the ability to think in a prospective manner, so you can use that to conclude your answer. मानिए कि आपको किसी प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के लिए पूछा गया है, कोई भी प्रॉब्लम है. अगेन आई विल गेट बैक टू दैट डिजिटल डिवाइड, फॉरेस्ट फायर्स, अर्बन फ्लड्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स अराउंड अस. ओके, तो आपने उसको एनालाइज किया है, तो कंक्लूड कैसे करेंगे. तो कंक्लूजन का एक तरीका हो सकता है, यू कैन स्ट्रेट वे, इफ इट इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव एनालाइज्ड इन द मेन बॉडी ऑफ योर आंसर, one effective way of concluding answer can be suggesting few measures. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आप वही थोड़ा अलग से भी लिख सकते हैं, यानी कि सजेशन ही अलग से लिख सकते हैं. उसमें क्या करेंगे हम, अगर हमने ये नहीं किया तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ सकती है. You got it?
तो मैंने सजेशन की ही बारे में बोला है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बोला है उसको, क्योंकि एवरी आंसर कैन नॉट बी पॉसिबली स्ट्रेट वे कंसिस्ट ऑफ अ कंक्लूजन विच इज ऑफ जस्ट मेजर्स, स्ट्रेट वे मेजर्स। तो उसको थोड़ा अलग से हम कर सकते हैं कि ये भी हम डेफिनेटली सोच सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है, तीसरा तरीका मैं कहूंगा कि किसी एनालिस्ट ने अगर कुछ कहा है, ओके, किसी पब्लिक डिग्निटरी ने कुछ कहा है, शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो सकते हैं, होम मिनिस्टर हो सकते, कभी कभार उनको भी लाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, वी आर नॉट ऑलवेज सपोज टू बी क्रिटिकल ऑफ देम। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ कहा है, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो उनका जो इंपॉर्टेंटली कीप एन आई ऑन, बिफोर आई फॉरगेट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनका हर एक पब्लिक स्पीच आपको पढ़ना चाहिए, हर एक पब्लिक स्पीच, उसमें बहुत सारी बातें होती है। ओके, पब्लिक स्पीच, उनके स्टेटमेंट जो ये क्या वर्डिक्ट जजमेंट तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो पब्लिक, बहुत सारे ऑकेजन्स होते हैं ना, कभी कभार प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं वहां पे, तो उनको भी सुनाते हैं वो कुछ। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑकेजन्स होते हैं, तो वो देखिए आप। तो ये जो है आपको वो हिंट मिलना ही चाहिए कि नहीं ये मैं कंक्लूजन में डेफिनेटली आई कैन इंक्लूड, as rightly pointed out by Chief Justice of India in so and so lecture or President of India in so and so, ये भी आप डेफिनेटली लिख सकते हो, ये इंट्रोडक्शन भी हो सकता है डेफिनेटली। सो कैन आई कीप ऑन थिंकिंग of concluding my answer in many more ways। जनरली क्या होता है कि सर बताइए मुझे कंक्लूड कैसा करना है, तो मैंने माना कि एक ये दो चीजें बताइए, तो आप वही करेंगे, वो मत कीजिए। दो चीजें कुछ आंसर्स के लिए करेंगे, उसके बाद आप भी सोचिए कि और क्या तरीका हो सकता है। सो दैट कैन बी अनदर वे ऑफ डूइंग दैट। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको ऊपर उसका रेफरेंस आया था, फिर मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। Are facts important for mains examination? Yes, they are. Facts also are important for mains examination, जो essential facts है। ऐसा नहीं कि facts only prelims के लिए important है, ज्यादा है उसमें। और जिस टाइप का factual understanding pre में है, उस टाइप का मेंस में essential नहीं है, क्योंकि वहां तो ABCD से ही निकालना है ना एक। तो यहाँ हम थोड़ा, हमें अगर 9.2 भी पता नहीं है तो हम जनरली लिख सकते हैं 9%। ये स्पेस है ना मेंस में, वो प्री में तो है नहीं। तो essential facts are going to play significant role even in mains। अब होता क्या है बहुत बार, और वो पता नहीं, वो थोड़ा सा रिलीव्ड होते बच्चे कि अब टेस्ट सीरीज कल से शुरू हुआ है हमारा, तो अभी प्रीलिम हुआ है ना, 5 जून को प्रीलिम्स था, और जिस टाइप की पढ़ाई उन्होंने की है प्रीलिम्स के लिए तो आप सबको पता है। अब इमीडिएटली एक हफ्ते के बाद मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, तो पहले 2-3 पेपर में ऐसा होता है कि फैक्ट्स आर नॉट एडिक्वेट इन पेपर। तो हम कहते कि अरे भाई आपने अभी प्री का पढ़ाई किया है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो जो एक प्री का सब कुछ वो जो माहौल होता है, तो उनको लगता है कि अब खत्म हो गया है। सो दे आर रिलीव्ड, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, और वो थोड़ा सा रिलैक्स से हो जाते हैं, और फिर वो भूल जाते, पता नहीं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आंसर में आता ही आता है। तो मैं कहूंगा कि विदाउट नॉट डूइंग दैट, लेट अस डू वन एक्सरसाइज कि अभी मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर प्री लिखा है, उसके पहले 5 महीने प्री की पढ़ाई करी होगी, उसके पहले 8 महीने मेंस का पढ़ाई किया होगा आपने, तो आपका तो बैकग्राउंड बन चुका है। तो बाद में क्या करेंगे हम, तो हमें पता होता है कि जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, जो फैक्चुअल डिटेल्स है, किस चैप्टर के लिए, किस एस्पेक्ट्स के लिए मुझे रिवाइज करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने देखे होते हैं, तो कौन से टॉपिक्स मैंने इस एग्जाम के लिए, आने वाले मेंस के लिए मैंने व्हाट फोकस किए हैं, आइडेंटिफाइड किए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एटलीस्ट look into the important factual, not every fact, but the prominent fact of those topics or areas. Point number 1. Point number 2, data. प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन मेंस के लिए डेटा शीट आप डे 1 से शुरू कीजिए। आप डोमेन्स देखिए, एजुकेशन है, सिलेबस इसलिए भी देखना है। सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको शायद 30-35 डिफरेंट डोमेन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है,
ओके, सोसाइटी का अगर आप सिलेबस देखोगे तो डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस है, तो वीकर सेक्शन में तो बहुत सारे सब सेक्शंस हो सकते हैं। विमेन ऐसा एक सेपरेट कीजिए, एनवायरमेंट सेपरेट कीजिए, रूरल डेवलपमेंट सेपरेट कीजिए, अर्बनाइजेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए कितने होंगे सिलेबस, अगर आपने देखा तो आपको 30-35 ऑड स्पीयर्स डोमेन्स कैन बी डेफिनेटली आइडेंटिफाइड। तो न्यूज़पेपर में जो डेटा आएगा, इकोनॉमिक सर्वे में जो आएगा, बजट में भी काफी बार नंबर्स बताए जाते हैं, एनएसओ का डेटा होता है, और यहाँ आपको उसका एक कंपाइलेशन डेफिनेटली मिलता है। तो मैं क्या कहूंगा कि राइट फ्रॉम डे वन लेट अस कीप दैट डायमेंशन ओपन। किसका डायमेंशन? डेटा शीट का, कि मुझे इसेंशियल डेटा, वो जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी हमें पता चलेगा कि यस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसका एक डेटा, और आपको लगेगा कि वो उसको पढ़ना कैसे है, ध्यान में कैसे रखना है, तो बार बार पढ़िए। तो उसका एक इसेंशियल उसका एक फंडामेंटल लॉजिक आपने आपने बार बार पढ़ के आपको आ जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो डेटा इज गोइंग टू प्ले अनदर रोल. Next thing which is to be paid due attention to throughout your preparation: examples, models and case studies. Examples, models and case studies. Okay, you should become habitual of explaining each and every point by citing out a relevant example. Let us become habitual of that. Okay, तो वो हैबिट ही हमें डालना है कि हर एक मुद्दे के लिए मेरे पास एग्जाम्पल होना चाहिए. लेट अस ट्राई टू डू दैट. ओके, सो बट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स. सो शुरू में गलती भी होती है तो यू डोंट वरी अबाउट दैट. सो वो सुधारी जा सकती है. यू डोंट वरी अबाउट दैट. इवेंचुअली विल कम टू नो अबाउट दैट फॉर्मेट. सो दैट इज वन थिंग. एग्जाम्पल्स आप देखिए कि आपको मेजर्स पूछे गए हैं, सजेशंस पूछे गए हैं किसी इश्यूज के बारे में. अगर आपके पास सही एग्जाम्पल्स है तो एज इज डन इन सो एंड सो स्टेट, सेम कैन बी थॉट ऑफ इन दिस स्टेट एज वेल. तो एग्जाम्पल आपके पास अगर है तो डेफिनेटली योर आंसर will what become substantial. वो abstract नहीं लगेगा, वो abstract नहीं लगेगा. उसको substance तभी आएगा जब आपने उसको शायद डेटा दिया है, शायद फैक्चुअल उसका कोई आधार दिया है, या एग्जाम्पल दिया है. ओके, जब इन तीनों से कुछ करते हो तो आपका आंसर, आपका आर्गुमेंट एब्स्ट्रैक्ट नहीं, जनरल नहीं लगेगा, वो सब्सटैंशियल लगेगा. ओके, केस स्टडीज, models, I'll include both of them, take both of them as together as one and the same. बहुत सारी केस स्टडीज का मतलब उसको मॉडल कहेंगे, इनिशियली मॉडल कहेंगे कि मानिए कि किसी विलेज में वाटर क्राइसिस था और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए उस विलेज ने शायद वाटर मैनेजमेंट का कोई एक्सपेरिमेंट किया है. तो उसका कोई न्यूज आइटम आया है, एडिटोरियल में उस पर कोई पीस लिखा गया है, तो मेक इट अ पॉइंट टू रीड इट केयरफुली एंड राइट इट डाउन. ओके, सो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो मॉडल क्या था, उसमें किया क्या गया था, और उसका थोड़ा बारीकी से आप पढ़िए और उसके प्रिसाइज माइक्रो पॉइंट्स लिखिए. और वो करते समय एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए. लेट अस मेक इट अ पॉइंट टू पे अटेंशन टू वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट? व्हाट फैक्टर्स, okay, were the influential factors, the determining factors as far as that given experiment or model is concerned. अब जैसे हमने कहा कि वाटर क्राइसिस था और कोई मैनेजमेंट का उन्होंने कुछ किया है, तो क्या what played the role? Was it the community participation? Was it role played by some NGO? Was it the initiative taken up by the local level administration? Was it the local level leadership? Okay, what was that? And there may not be just one or two factors. There is likely to be many more factors. So आपको हर एक टीचर, हर एक फैकल्टी ये भी कहेगी कि let us not write in a very generic manner, in an abstract manner. वो तो कोई भी लिख सकता है ना. Let us try to make it
एज सब्सटैंशियल एज पॉसिबल, और सब्सटैंशियल लिखने का एक ये भी तरीका हो सकता है, फॉर्म हो सकता है कि राइटिंग every sentence, if not every sentence, every argument in a self-explanatory manner. Self-explanatory manner. यानी कि पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा ये, तो आपने उसमें उस सेंटेंस में आंसर भी दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ओके, आप बताएं कि नहीं सर उसका कोई एग्जांपल हमें दीजिए, तो वो तो आपको करना है। ओके, आई कैन साइट आउट एग्जांपल, बट ध्यान में रखिए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो आपने एक मॉडल का रिपोर्ट किया है, और वो रिपोर्ट करते करते आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द लोकल लेवल इनिशिएटिव, द इनिशिएटिव टेकन अप बाय द what, maybe a public servant, maybe NGO, it can be anything. So you can bring in that causal factor in your narration of what the example or the model or the case study. Okay, and that case study, that model can be different, and we should not limit ourselves to get to know models from only few domains: private, public, हेल्थ, एजुकेशन, किसी भी डोमेन से अगर आपको कोई मॉडल मिलता है, ओके, तो वो मॉडल आप बारीकी से पढ़िए डेफिनेटली। एंड देन एज आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, फोकस ऑन द कॉजल फैक्टर्स, द फैक्टर्स व्हिच प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द गिवन मॉडल और सक्सेस ऑफ द केस स्टडी। सो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर से भी पढ़ने को मिले। सो लेट अस, अगर वो आपने किया है, so then I can say that yes, you have ensured that there is some amount of creativity and novelty. क्योंकि और दूसरी चीज क्या होती है कि जो ऑब्वियस एग्जांपल्स होते हैं, ऑब्वियस एग्जांपल्स, तो वो सब लिखते हैं। तो थोड़ा खुद को कहिए कि नहीं नहीं नहीं, उसके सिवा कुछ हो सकता है क्या? इज देयर एनीथिंग एल्स? कैन आई थिंक थ्रू फर्दर? इज देयर एनीथिंग एल्स? और ये एक्सरसाइज और ये हैबिट आपको उस टाइप के ऐसे लिखने में सबसे ज्यादा काम आएगी, सर भी बताएंगे आपको। तो वो जो फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे का आंसर तो हम एक पैरा में ही लिख सकते हैं, उस स्टेटमेंट का अर्थ हमें लिखना है, लेकिन मुझे ऐसे तो लिखना है 1000-1200 वर्ड्स में, तो फिर करे क्या उसका? उसमें पॉइंट्स, तो उसमें डेटा, उसमें फैक्ट्स, ये तो हर वक्त नहीं होगा ना। तो which ability of yours come to your assistance there, काम आती है वो क्या है? the ability to illustrate a point by citing out relevant examples, cases, वही काम आएगा। और उसमें आप लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, मे बी रिलीजियस इफ इट इज रेलेवेंट, ओके, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनजीओज, वॉलंटरी एसोसिएशन, जितना आप सोच सकते हो, और अगर उस हर एक डोमेन से आपके पास कोई एग्जांपल है तो डेफिनेटली वो काम आ सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ensure of something called as search for creativity and novelty. And then the last point, focus on building a critical thinking ability. This is going to play a critical role, क्योंकि खुद एक critical thinking ability है ना, उसका नाम ही वो है। तो क्रिटिकल एबिलिटी का मतलब क्या है? आप एक एक्सरसाइज कीजिए, बहुत बार मैंने शेयर किया है, व्हाइल रीडिंग द अर्लियर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप उस क्वेश्चंस में 21 to 3 में 20 आते हैं, इथिक्स में थोड़े कम नंबर है, ओके, तो आप कितने क्वेश्चंस में एग्जामिन, इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, ये जो वर्ड्स है जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग काम आता है, कितने नंबर्स होते हैं, यानी कि क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, ये निकालिए। तो आपको पता चलेगा कि 60 to 70% क्वेश्चंस इन ईच पेपर डिमांड व्हाट, दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि क्यों हुआ है, जो भी है उसका कारण क्या है, ओके। दूसरा, जो भी किया गया है, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो सकता है, तो उसको क्रिटिसाइज बहुत बार किया जाता है कि इस एस्पेक्ट से क्रिटिसिज्म किया है, उस एस्पेक्ट से क्रिटिसिज्म किया है, तो वो क्रिटिसिज्म, एंड देयरफॉर एडिटोरियल्स हेल्प अस हियर अ लॉट। एडिटोरियल्स क्यों पढ़ना है हमें? तो वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी उस चीज से आती है। कॉलम्स जो होते हैं, एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स जो होते हैं,
they make it a point to maybe appreciate the government initiative, but most of the time they make us pay attention to the flip side of the issue. क्योंकि आपको ये भी questions बहुत सारे देखें, how far the given government policy shall help us in dealing so and so problem. अब उसका लिखेंगे कैसे, how far. So policy मुझे पता होनी चाहिए, और how far कैसे मैं आंसर करूंगा. तो मुझे उस प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके चैलेंजेस क्या है ब्रीफली मुझे एड्रेस करनी है, और जो भी गवर्नमेंट ने किया है ओके तो वो उसका रिलेशन हमें लगाना होगा कि नहीं, अगर प्रॉब्लम ये है तो इज देयर एनी एलिमेंट इन द गवर्नमेंट स्कीम टू डील विद दैट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो ये हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ही काम आएगी. हिंदू जब आप पहली बार पढ़ना शुरू करते हो, अगर इफ यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग दैट काइंड ऑफ पेपर, तो बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर ये तो एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ही क्रिटिसाइज करता है. तो वो काम ही है ना स्टूडेंट का, ओके वो हमारा काम ही है. और दूसरा ये तो हमें देखना, इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए आप, कितने क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वाले ये पता चलेगा. नॉट लेस देन 60-70%, 60% तो पक्का ही होगा. तो उस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर मुझे अगर करना है तो ये एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप ये हर एक पास के है, हमारे हर एक पास है वो एबिलिटी. द क्वेश्चन इज ओनली हाउ फार टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव डेवलप्ड दैट. आप फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस assume here that we haven't developed it, and let us try to develop the same by carefully reading something, by asking why, how, when type of questions, engaging with the faculty in a critical manner, engaging with the text, whatever stuff you would be reading. So have a dialogue and critical dialogue with the same thing, and then keep on asking questions, and then resolving the questions as well. We have to find out the answer. So यहाँ होगा तो न्यूज़पेपर में है, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी. ओके सो ये सर्च फॉर क्रिएटिविटी, नॉवेल्टी थोड़ा मैंने ज्यादा उसको एक्सप्लेन किया, और ये फोकस ऑन बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग उसको मैंने ब्रीफली किया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर.